Hello, I'm sir. sorry, I'm not tech savvy at all, so it takes me time to get onto That's anything, and that's why I was a fine. little worried about this. But yeah, hi. So Hi, Mina, you're sir. looking all fresh and nice. How come? And I'm not The, looking even close thanks to. for talking slightly. How are you doing, sir? Listen, Of course, you also look very fresh and fit as always. Like, I still don't believe that you're 59. and all good with you? I'm good. I'm good. Let me try to adjust it. Yeah, I think that's better. Yeah. Yes, sir. Yeah. Now, what am I supposed to do? You have to tell me what I'm supposed to do. I'm So, gonna. I want you to tell about the new venture you have started for the youth out there and you're trying to help them. So, I want to know more about that FTC and how it, came to your mind and what was the thought process behind it and what exactly are you planning to do with it? Yeah, FTC Shorts. I think FTCTalent.com has been there around for 6 months to a year now. The whole idea being कि मैं चाहता था कि ये जो exploitation of talent हो वो बंद होना चाहिए कहीं ना कहीं लो opportunity मिलना चाहिए to go direct to the recruiters, to the producers, to the directors. They'll put up the requirement and the kids will get an opportunity. We've been working on that. Unfortunately, the corona happened, and because of the corona, at the same time, kids can't go for auditions anymore. Audition itself is a luxury now, having 10 people, 20 people at one place. So I thought of this idea कि क्यों नहीं हम एक short film festival एक challenge डाल दे जहाँ लोग घरों में बैठ के अपने घरों में बैठ के they can make a film and upload it on the FTC app and give an opportunity for talent to showcase itself, directors, assistant directors, use people, children who are on the platform itself to probably act or help you edit or do anything else. So it's like a community that is there online whom you can engage with and make your own short film. So what actually, made you come with such a plan and, to come with an app which is like, letting the talent, come with their talents and like, share that on their platforms and, get a See, chance to, because we keep, one second, I'm letting my little doggy in here now. He wants to come in for all the meetings. Sure, sir. So Completely. where is he? Brody, where are you? Say hi. See, that's Brody. That's Brody. You can see his tail now. I can't. Yeah. So he's trying to settle down and he's settling down. Sorry. I needed to. So, You'll have a good company with you. the whole Me Too movement is something I think that more so inspired it because, people are always complaining of being exploited, whether it was girls, whether it was young boys, or, and taken advantage of. I've always realized that in the industry, first it's financial exploitation of kids who come from outside of the country. उसके बाद में it is जब financially बच्चे drain हो जाते हैं तो mental स्ट्रेस हो जाता है उनको और एक बार मेंटल स्ट्रेस होने के बाद वो एक बात बहुत ही क्लियर है कि फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होती है तो ये दिस वे वी एलिमिनेट ऑल दिस कंप्लीटली फ्रॉम द होम्स एंड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम घर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि व्हाट किड्स put up your auditions. Let me get some of the best in the industry to judge it, and you'll always be there. And और ये एक स्कार भी है हमारे ये स्कार मैं चाहता हूँ कि ये रहे ताकि लोगों को याद रहे कि we've been through really really tough times और इस tough times में भी बहुत ही इमोशनल और अच्छे स्क्रिप्ट्स एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट्स आए हुए घर बैठे बैठे क्योंकि टैलेंट कहीं भी दिखता है So, आप ये जो app जो शुरू की है, which this will go on even after the quarantine phase. You want to continue this initiative completely, like give more scope to people, like not only like right now घर से कर रहे हैं, पर बाद में भी जब ये खत्म हो जाए phase उसके बाद भी like you would welcome a lot of course. ऑफ कोर्स अगर आप फिल्म नहीं भी बनाने चाहते हो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और आपके हुनर और आपके टैलेंट को वहां दिखा सकते हो और कोई भी रिक्रूटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर इवेंट मैनेजर रेडियो जॉकीज ढूंढते आर्ट डायरेक्टर्स सारी जो मीडिया की टैलेंट है वो वहाँ पर बेस्ड है तो आपको बहुत ही आसान अपॉर्चुनिटी मिलता है
to choose that talent that you want. और अगर आप दिल्ली में फिल्म बनाना चाहते हो तो दिल्ली की टैलेंट को ले लो, तो इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव टू यू. वैसे ही एक प्रोड्यूसर अगर या डायरेक्टर कहीं और जाए, कहीं भी इंडिया में, वहां से आप टैलेंट को उठा सकते हो ना. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी. शादी के लिए अगर किसी को एमसी चाहिए या सिंगर चाहिए तो प्लेटफॉर्म पे है. तो इसी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि talented बच्चे जो है, मीडिया talented बच्चे हो, तो it could be behind the scenes, it could be cameraman, assistant cameraman, writers, copywriters, art directors, designers, सब आपको प्लेटफॉर्म पे मिले. So when you started off your career, I mean, you started doing a lot of movies. आपने भी ऐसे कई directors को, you had revealed in one of my interviews actually recently when we had met you personally, that आपने भी कई सारे directors को, you let those directors to have those movies with you, and जिनके पास actual में projects नहीं थे, but you made, you ensured to be a part of their projects. Right. Some didn't work for you also, but still, like, you instill that trust in them, and like, you let them have a career in Bollywood like that. So, like that, if you get some good director, online, would you give that director a chance to direct a movie of yours? Of course. I mean, maybe not a movie first, maybe associate with a movie, maybe do a web, do a television, something for TV, and probably after that experience do that. But you never know. Sometimes अगर कोई अच्छा talent निकल आए तो उसे फिल्म भी मिल जाए. और the idea of the FTC Shorts यही है कि directors हो या actors हो या editors हो या बैकग्राउंड के लिए लोग हो या राइटर्स अच्छे हो, तो उन्हें मौका दिया जाए. और सिर्फ मेरी कंपनी और एफटीसी नहीं देगी. ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे लोग, a lot of people come from all different walks of life and they can use the talent. It's an open forum. ये नहीं है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप टैलेंट है तो आप किसी और की फिल्म नहीं कर सकते और किसी और के साथ जुड़ नहीं सकते. इट इज वी डोंट बाउंड द टैलेंट फॉर एनीथिंग. वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हो तो 10 और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकते और 50 और लोगों के साथ काम नहीं कर सकते. वो मैं चाहता ही नहीं और कभी होने भी नहीं दूंगा. Also, so like for example, ये प्लेटफॉर्म एक ऑडिशनिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं कि कहाँ पर जहाँ पे कंटेंट आते रहेगा, यहाँ पे ऑडिशन करते रहेंगे. And वो कंटेंट को like of course best of the directors देखेंगे, analyze करेंगे, and then the best will be selected. But after the selection process, इनका जो ad बनेगा या इनकी जो short full films होगी, वो सब कुछ आपके ये ऐप पर दिखेगा हमें. या ऐप पर दिखेगा. और बहुत सारे लोग कल से थैंक्स टू यू गाइस हु ब्रोक द स्टोरी, बहुत सारे लोगों का फोन आया हुआ है कि दे वांट टू शो दीस फिल्म्स on various platforms, and I'm more than willing. It's not कि ये लोगों के लिए किया गया हुआ है. It's got nothing to do with money. This is one way कि मैं चाहता था कि लोग encourage हो और कुछ करे. और देखिए, हमेशा फिल्म से जुड़े रहना चाहते हैं लोग. आज बहुत सारे एप्स अगर पॉपुलर हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं गाना गा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ कर रहे हुनर दिखाना चाहते हैं. तो मैं जितने प्लेटफॉर्म्स पे हो सकूंगा मैं दिखाऊंगा. फॉर्चुनेटली फॉर अस, मैं भी काफ़ी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हूँ. कंटेंट, हम काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वहाँ दिखाई देगा. और ये कोरोना रिलेटेड फिल्में होगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस दौरान के बने हुए वो फिल्में हैं वो मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा. क्योंकि घर में रहकर आप फिल्म बना रहे हो with all the restrictions in the world, तो आप सोचिए बाहर निकल कर क्या होगा. और ये जो चैलेंज है, मैं चाहूंगा कि इस वक्त में ही हर साल मैं अनाउंस करूंगा इसमें, याद दिलाने के लिए कि what did we go through and yet what did we manage and how did we come through it. So it's like a soldier carrying a scar on his body or a bullet wound on his body and saying, देखिए मैं ये जंग में था और ये मेरी scar है. तो I want to remind people that that we should all be equal, we should all be given an opportunity. Disparity है वो कम होनी चाहिए आज, क्योंकि ये मेरी अगर रियलाइजेशन कोरोना से यही है कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. अमीरों ने गरीबों को ये बीमारी दी और अब गरीब हमारे लिए काम कर रहे हैं और अमीर घर पे बैठे हुए हैं. So to salute to all the social workers and everybody who's involved. So बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ और बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से मैंने डिसाइड किया दैट
we need to do something like this. So let people come out with their own stories. Trust me, no story is bad. Good, bad, or not very good. Every film will be shown on a particular platform because somebody has made an attempt to do something, and I'm going to value that. Yes, winners को बहुत सारे prizes है, बहुत सारे brands आगे आए हुए हैं. Those who are giving gifts, वो भी brands gifts जो है FTC को नहीं आएंगे. Jury और judges के बाद जब selection होगी, brands with a thank you note will send the gifts directly to the house of the talents. And not through FTC. So I've kept myself completely away from this. There is no profit. There is no nothing. ये वक्त ऐसा है जब देने का वक्त है, और बाकी जो चीजें कर रहा हूँ उसके साथ साथ आई थिंक ये भी एक गिफ्ट है लोगों के लिए, टू कीप देम एंटरटेन. माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, आप किसी के साथ भी घर बैठे बैठे फिल्म बना सकते हो. Also, would we get to see you doing some small, kind of shooting and putting out there for? Yeah. Attempt is there, and I will do something. But trying to attach myself to people who are making films, because I don't want to judge myself or don't want anything to be judged. It will always be kept out of judgment. But if somebody wants me to act, then Samina, if you're doing something and if you want me to act in your film from home, I'll do it. Of course. Atya wants to do something, so I told Atya. Have you as the actor for sure. Yeah, sure. I'd love to do it. So यहाँ पे आपके आने के पहले एक रिक्वेस्ट काफी थी कि आप कोई भी आपका फेवरेट मूवी डायलॉग बोले, and I want you to say one of your favorite movie dialogue which you like. हमेशा डायलॉग जो मेरे होते हैं तो लड़का और लड़कियां दोनों अगर रिएक्ट करते तो अंजलि को जब मैं याद करता हूँ तो जरूर कहूँगा कि समीना तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा. थोड़ी ट्विस्ट लेकर आया मैं, क्योंकि शिल्पा मुझे छोड़कर चली गई थी अक्षय के साथ, तो आई एम स्टिल वेरी अपसेट विद दैट. तो धड़कन 2 कर सकते हैं ना आप, उसमें धड़कन 2 hopefully Dharmesh will do it and Venus will do it with Ahan and Akshay's son and now Shilpa's daughter. She's got a baby girl, so cute. Yeah, she's very cute. Yeah, but she's too little. Have you met her personally? No, I haven't, because all this started, and the baby needed to be quarantined and kept away from people, which is very good. So no, but she's still little also, from Ahan and his son Arav. But just a thought, just. So Ahan is also ready for his Bollywood debut. Would you like to say something on this? How excited are you as a father? Because we have seen his body and we have seen him covered by paparazzi, and he's already a star out there. So what do you have to say about that? How happy are you? I'm very, very happy because everything about the project is right. A great subject, a remake of RX-100, a super duper production house, a super duper producer, a phenomenal director, Milan Luthria, writer Rajat Kapoor, music by Pritam Da. Best of Singers as part of it, T-Series music, Sajid Nadiadwala producing it, Nadiadwala grandsons, the production house, Fox distributing it. I think everything is just right. Tara co-artists, some very strong co-actors also, and well shot, 90% done, very, very well shot. So now, like I keep telling Ahan, now it's your destiny and your hard work and the kind of human being you're going to be that is going to determine and mark your career. So stay humble, stay honest. Have you seen some of the scenes and have you given any kind of feedback to him, because you have been here since the longest time, so you know how it works. Yeah, but I don't think I need to, because he's in the right hands and too many cooks spoil the broth. But for me, it's always advised as to to be honest to your work, feel your character. And I think Ahan is someone who feels his character. He's not a method actor. He's done stage and school and everything, but he's an actor who feels. And I saw him on the sets because I had gone to Mussoorie and I saw him on the sets, and I feel he's a natural. He's someone who gets into the skin of the character very, very easily. And very quickly, so that's the way it is.
So will we see Ahan and Athia also trying to audition on this app and give a chance, because you are the one who's judging somewhere. You can be the one judging their content actually. I don't know whether they want to, but I'm sure they will. But the thing is, they've been auditioned and they're already a part of a film, so Yeah. I don't think the producers and people will want it. But no, but of course they help me with everything that is there. They help me spread the word, and they say nepotism, nepotism, nepotism. So this is my answer to everybody out there that here's an opportunity for hundreds of kids, producers, directors, editors, music directors, stand-up comedians to come and show. It's got to be a film, though. It's got to be a 15-second to 3-minute film. As long as you can narrate your story from your own home, social distancing, using friends or talent from the platform. If you need someone to edit it, you can give a shout out on the platform, and somebody will connect with you to edit your film or do. So it's like a community on the platform. It's an FTC family. So yeah. So, even for Ahan and even for Athia, sometimes their personal life comes into radar of of media and of even public life. And recently, like today only, Athia wished Rahul, KL Rahul, on social media for his birthday, and that has already become a trending news, a trending topic. So sometimes does that bother you as a parent, because somewhere you feel like that personal life should be like No, I've been an actor for the last 30 years, and they've chosen that path. So, of course, people will write about them. Of course, people will want to know more about it. As long as it is respectful, I don't have a problem. But if you're going to be running down someone for no rhyme or reason and speculating to a great extent, the media also has to remember today that we've got the power of the media in our hands too. We have fans, we have social media, and right or wrong can always be put out there and discussed. I have the guts to tell people if they've written something wrong about me, where I write and say, hey guys, news is wrong. Rectify it, or I'll rectify things myself, without wanting to hurt anybody or harm anybody. But if anybody is going to try and hurt you and harm you, then we've got our own voice here. We've got our own voice, and we have a powerful voice too. So what do you have to say about KL Rahul as a sports personality? Oh, he's unbelievable. I always believed he's one of the best talents that we had in the country, and people might say otherwise today, but I've been saying that for quite a few years, that he is probably one of the technically perfect batsmen in this country. Of course, Virat Kohli is someone you leave aside because he's legendary. But Rahul is one of the foremost and one of the finest technical batsmen that this country has seen. He's got his shots all around. And I follow cricket. I know cricket. I'm not talking just like a cricket fan. I'm as good as an expert, or probably better than most experts, because I see talent. For me, he's a good kid. It doesn't matter who he is and otherwise. So yeah, I think he's phenomenal. He's phenomenal. And now the double duty of also wicket keeping in the one days and the T20s. So a huge advantage. Though I feel Rishabh Pant is also phenomenal, and too much pressure on that poor child. But I'm sure he'll learn and he'll mature and come good for the country. Of course, sir. So, since you're so close to sports, we see a lot of things, happening off late on Twitter. For example, like Babita Fogart actually, speaking and tweeting a lot of things, and being taken otherwise out of context also, and somewhere she's giving clarification, and there are a lot of things happening also from her end. Do you have any thoughts, and you have to say anything on this topic? Would you like to, throw some light? Yeah, I think people should look at it in a more positive way than looking at it negatively. Negative news is the only thing, and hatred and spitting venom is the only thing that scares me on social media. So if you see, I do involve, but for me it is to wish someone or something good is happening, to retweet or comment on it. I look at things very positively. मैं हर वक्त घोड़े पे ही रहता हूँ. मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होगा. और वैसा इंसान ही हूँ मैं. तो इस वजह से I stay positive, and I try to read that. I think as far as sportsmen and athlete goes, we should look, if they're not politicians, we need to look at it that way. We need to look at it from a sports perspective and not from a politics perspective. If it's a politician who's speaking, anybody who's political, look at it the way you want.
you know, because everything you'll be looking at negatively. Now is not a time, I think, where we need to be negative. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, praising someone, running another community down, or individuals down, doesn't make sense at all. Let's work towards it as Indians. हमें लगता है कि लोग मजदूरों को एक बार जगह जमा कर दिए. I think मैसेज ये जाना चाहिए कि हमारे मजदूर भाइयों के कि आप लोग जहाँ हो सुखी हो, रहो, अफवाहों पे मत बिलीव करो, लोगों पे मत बिलीव करो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का सोचो. एंड एट द सेम टाइम यू कांट ब्लेम देम. वो भागना चाहते हैं क्योंकि हम वो घर जाना चाहते हैं, बच्चों को, माँ बाप को, बीवी को वो देखना चाहते हैं, और उन्हें कभी कभी नेगेटिविटी में लगता होगा कि अगर मर जाए तो यहाँ क्यों, हमारे गांव में मरे, खाना तो मिलेगा दो वक्त का. तो आई थिंक वो चीजों को याद रखते हुए अगर हमको 10 बार समझाना पड़े तो हमें 10 बार समझाना चाहिए, 12 बार समझाना पड़े तो 12 बार समझाना पड़े. हम किसी को रिडिक्यूल करके उसको गधे हैं, समझ में नहीं आता, बर्बाद करने की, वो बोलने से नहीं होगा. आई थिंक दैट्स व्हाई हियर एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां वो बार बार मैसेज भेजते हैं कि घर पे रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, हाइजीन रखिएगा. लॉट ऑफ पीपल से, अरे तुम लोग काम धंधा नहीं है क्या? अरे यही काम है, यही धंधा है अभी, लोगों को समझाना. और अगर मैं 10 आदमी को भी कन्विंस कर लेता हूँ कि भैया घर पे रह जा, आई थिंक मैंने अपना काम किया है ना. आप गाली देके क्या कर रहे हो उसको? आप हेल्प कर रहे हो किसी को? नहीं. तो टू ईच वन इज ओन. और बिफोर यू पॉइंट द फिंगर यू शुड सी हाउ मेनी आर पॉइंटिंग एट यू. आपने क्या किया है? एक आदमी को भी खाना खिलाया क्या आपने? मजदूर हो या एक लोकल किसी को आपने एक आदमी को भी खाना खिलाया? ये सवाल पूछ लीजिए अपने आप से. और अगर आपको लग रहा है कि आप मदर टेरेसा का काम आप कर रहे हो, तो प्लीज हक है आपको. सर हमेशा ऐसे देखा गया है कि कुछ भी होता है इन द कंट्री, बी इट अ फ्लड, बी इट अ कोरोना वायरस, हमेशा सेलिब्रिटीज पे काफी प्रेशर आ जाता है कि उनको फंड करना चाहिए. आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत भी है? बिकॉज people might be having their own struggles also. Not every celebrity is blessed with a Absolutely. and what they might be Absolutely. doing, not always they are showing it on camera कि नहीं हमने आज ये किया है, आज पिक्चर निकाल के डाला है. Of course ये sometimes it encourages also कि जब आप ये कुछ करते हो, जैसे कि माना शेट्टी ने किया था fruitful activity, when they are putting it out there, encouraging people to come and join the cause. But every time it's not possible to just keep on posting क्या क्या किया है charity के लिए. Sometimes actors become a victim of Absolutely. Why do you expect from them? गवर्नमेंट का काम है, पहले तो गवर्नमेंट का काम है सेंटर और स्टेट्स का संभालना. एज सिटीजन्स हम जो करें वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा. हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं और साल भर काम करते रहते हैं. आप आमिर खान, शाहरुख को देखिए ना, शाहरुख की बैंड बजा दी लोगों ने, ट्रोल कर दिया कि इसने ये कर दिया तो इसने ये नहीं किया. आई मीन शाहरुख कितना करता है शाहरुख जानता है. विदाउट पब्लिसिटी. स्टारडम और ऊपर वाले की देन और ऊपर वाले का हाथ ऐसे ही लोगों पे नहीं पड़ता. देयर इज अ रीजन व्हाई यू बिकम व्हाट यू बिकम. सलमान, आप लोग बात कर रहे कि अच्छा यार उसने वर्कर्स के लिए इतना सब किया, लेकिन आप ये नहीं जानते कि 10 गुना और कर रहा है वो. जहां वो पनवेल में रह रहा है, शायद पूरे गांव को वो सपोर्ट करने के लिए निकला हुआ. तो हर बात को मीडिया में डालने की जरूरत है नहीं ना. सो आई थिंक इफ यू वर्क and you have confidence in yourself, you don't need to shout out and tell anybody anything. कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो हिट के ऊपर हिट देते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं और are still humble. और कुछ एक्टर्स जिनकी फिल्में चलती नहीं है वो कलेक्शंस इतना दिखाते हैं. तो each one has अपना तरीका to do their PR or talk about their work. लोगों के बारे में लिखना जरूरी है जब अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उससे एनकरेज होके दूसरे लोग इस काम में उतर जाते हैं. तो that is something that needs to be done also, but not compete with each other कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं 10 को खाना खिला रहा हूँ, मैं 100 को खाना खिला रहा हूँ. खिला रहे हो ना, आप खुश हो ना, आपको पता है कि ऊपर वाला ये सब देख रहा है ना, और कहीं ना कहीं बरकत होती है अच्छे काम की. तो that's okay. I think like good karma and bad karma. Absolutely. Bites you, bites your kids, bites everybody. Yeah. Also, sir, yesterday Raveena Tandon took to Twitter and she shared this news. It's of course there everywhere. Karnataka, former CM, he got his son married, and I think at this situation, what we are currently in,
it has been taken like, of course, like यहाँ पे gathering नहीं करना चाहिए, but of course he also responded to the same thing, like 12-13 doctors को consult करके we have taken like private ceremony and all, because of course like कुछ dates होता है, वो होता है wedding का, but like of course he got trolled because somewhere of course it's considered wrong, because gathering at this moment is wrong, and people gathering on the streets also right now is causing a lot of harm. हमारे केसेस थोड़े कम तो हुए हैं, बट वो भी है कि केसेस बढ़ भी रहे हैं, हमारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे, पर at the same time cases have increased also. So what are your thoughts on this, sir? I think registered शादी होनी चाहिए थी, हाँ, लड़का लड़की और रजिस्ट्रार, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था, बट टू ईच वन इज ओन. लेकिन जब हम बोलते हैं कि ईच वन इज ओन, अगर ईच वन इज ओन करने भी जाए तो फिर ये बीमारी रुक भी नहीं सकती. आई थिंक सब कुछ रुक सकता था. आई नो सो मेनी पीपल जिनके बच्चों की शादी होने वाली थी और वो रुक चुकी है. सो डॉक्टर्स ये गारंटी दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा. कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि उसको खुद को नहीं पता कि किसको हुआ. दे आर वर्किंग टायरलेसली. तो डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेके हम बाहर नहीं जा रहे कि डॉक्टर मैं जाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा ना. आई थिंक दे शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल. एंड आई अंडरस्टैंड इट वाज अ स्मॉल सेरेमनी, जहाँ लाखों लोग होते, 15 और 20 लोग थे, but it's for the safety of their own family, or so there will be positive and negative. Positive भी है इसमें कि हमने छोटी शादी की है, हमने बाकी लोगों की तरह इतना नहीं किया. जैसे मेरे गांव में हर साल पूजा होती है और लाखों लोग जमा हो जाते हैं रथ खींचने के लिए. हर साल हम भी जाते हैं इस वक्त पर, लेकिन शायद पहली बार हिस्ट्री में. और याद रखिएगा, उस बप्पनाड टेम्पल नाम है, और मुल्की एक छोटी सी जगह है. बप्पनाड का मतलब है एक मुसलमान, और एक मुसलमान ने टेम्पल बांधा हुआ है वो टेम्पल. और जब भी देवी माँ निकलती है तो पहले निकलते ही उस घर में जाती है और वहाँ आरती होती है, उनकी पूजा होती है वहाँ पर. और ऐसे जगह पे कोई नहीं था, आई थिंक बेसिक पंडित के अलावा, जो देवी की पूजा हुई. और इस बार वो नहाने पब्लिक के साथ नहीं गई, जहाँ रिवर में उसे बेद किया जाता है और पूजा किया जाता है. शायद 1-2 जन गए थे. तो जब देवी भी एक्सेप्ट कर ली और अल्लाह ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ही होगा, तो हम कौन है? आई डोंट थिंक we should break rules, laws, and we should stick to it. Thank you so much, sir, for your time. And the last question, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए पूछ रहे, हेरा फेरी 3 कब हमें देखने मिलेगी? And I actually recently watched हेरा फेरी 1, and I'm watching all your old comedy films. Like I'm watching Halchal now. So one of my favorite films is Ye Tera Ghar Mera Ghar. Please do watch it. A Priyadarshan film. It's a lovely film. It came before its time. Oh, it's a beautiful film. It's one of my favorite films. हेरा फेरी 3 देखिए, प्लानिंग तो चल रही थी, सेकंड हाफ में हम सोच रहे थे, पता नहीं ऑफ कोर्स होती भी या नहीं, लेकिन इट वाज मोर टुवर्ड्स हैपनिंग. लेकिन आई थिंक अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो पूरी इंडस्ट्री ने भी रियलाइज किया है, नोइंग आवर फिल्म इंडस्ट्री, कि हम काम करेंगे तो पहले वो फिल्मों को खत्म करेंगे जिनके पैसे लगे हुए हैं. अगर हमारी डेटे हैं तो वो डेटों को वी नीड टू लेट गो एंड एडजस्ट अदर फिल्म. क्योंकि जब ऑलरेडी लोग ब्लीड कर रहे हैं और ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनकी फिल्म पहले रिलीज होना, उनकी फिल्म पहले बनना बहुत बहुत जरूरी है. मेरी एक फिल्म प्रोडक्शन पे जा रही थी जून में. अगर मेरे को आर्टिस्टों को तकलीफ होगी और उनको डेट की जरूरत होगी, आई थिंक आई शुड बी विलिंगली रेडी टू पोस्टपोन द फिल्म, क्योंकि जो फिल्मों में वो काम कर रहे हैं उसकी डिलीवरी होनी बहुत जरूरी है. अदरवाइज इट विल बी अ मेहम, इट विल बी अ ब्लड बाथ, एंड वी डोंट नीड दिस ब्लड बाथ, बिकॉज गॉड अलोन नोज इकोनॉमिकली हम कैसे रहेंगे और कितनी ताकत रहेंगी हमारे में to come out of this corona episode financially secure and safe. Thank you so much, sir, for your time, and Thank you. the best for all your venture, and of course for the new venture you have started. For all the people out there, I would personally download and also see like how it works now, and maybe give audition. But no, but you won't believe it, Samina. Yesterday I think we had more than 40 entries of films already, day one. जहाँ लोगों को हम सिर्फ अनाउंस करने की कोशिश कर रहे थे, 40 फिल्में ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है.
which is phenomenal. And I got an opportunity to see one or two films. And the first film I saw was of a friend of mine who's in the business of radio, and he made me cry. And it was about a husband and wife, and they did it, and I had tears in my eyes. I showed it to Atia. She said, "Whoa!" I showed it to Mana. She choked. So I think we're looking for something great here. So all you guys, the FTC Shark Challenge is a challenge where you, with your family, with your pets, whatever subject you want to choose. Agar your pet, you're crazy about pets. Do something about pets. Put that out. Peter will also appreciate what you're doing. Pet lovers will also appreciate. Show that emotional angle. Show how it makes a difference to your life or how you can impact people or whatever it is. So whatever the subject it is, do involve good. Nothing is bad. So good, not so good. We promise we'll show it and talk about you. So on your social media, before I let you go, we would definitely see you walking with your pet, your cute dog, and some video of it for sure. Do post it. I will. I have 5 of them in the farm and 1 here. So because it's a lockdown, I couldn't go, and I shared the picture of my Great Danes who are automatically maintaining social distance. Yeah. You know, and staying afar and staying indoors. So for sure I will. And to all the pet lovers out there, and to all the people who keep saying that pets are spreading, they're not spreading. They're keeping us happy. Because we are happy, we are mentally strong. Because we are mentally strong, our immunity is lot stronger thanks to our pets. So guys, pets are it. Thank you so much, sir, and all the best, and hope to see you soon and do a full-fledged interview soon. Goodbye, sir.